Assalamu alaikum students. I'm your teacher of the subject English, Miss Sana. I hope you are fine and are quite safe. So let's start our lecture. Students, we have just finished our unit number 1, Nicobovenus. Today we will discuss its exercise and question answers. So let's start our lecture. Question number 1 is, what do we learn about Nicobovenus in the first paragraph? स्टोरी के फर्स्ट पैराग्राफ में हमें निकोबेनस के बारे में क्या पता चलता है? एंड द आंसर इज, वी लर्न दैट निकोबेनस इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी चाइल्ड हु स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर. ही लिव्स इन वेनिस एंड दैट ही कुड डू एनीथिंग. निकोबेनस एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चाइल्ड है, मिस्चीवियस है वो. इवन के वो प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी टंग शो कर सकता है. वो इटली के सिटी वेनिस में रहता है एंड ये उसके बारे में फेमस है दैट निकोबेनस कैन डू एनीथिंग. क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु इज रोजी? एंड द आंसर इज, रोजी इज निकोबेनस बेस्ट फ्रेंड. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई डोंट पीपल पे अटेंशन टू व्हाट रोजी सेज? जो कुछ भी रोजी कहती थी, लोग उसकी बात पर तवज्जो क्यों नहीं देते थे? And the answer is, people do not pay attention to what Rosie says because she is always having wild ideas. लोग रोजी की बात को इसलिए तवज्जो से नहीं सुनते थे क्योंकि रोजी के पास हमेशा स्ट्रेंज आइडियाज और वाइल्ड आइडियाज होते थे. क्वेश्चन नंबर 4 इज, what 2 things does Rosie suggest that Nicobovenus should do? रोजी ने निकोबेनस को कौन सी 2 एक्टिविटीज सजेस्ट की थी? प्लीज स्टूडेंट्स टर्न आउट द पेज एंड द आंसर इज, रोजी सजेस्ट दैट शी एंड निकोबेनस शुड पुल अप एवरी वीड ऑन हिज डोरस्टेप एंड डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स. रोजी ने निकोबेनस को सजेस्ट किया था कि हम दोनों को मिलकर हमारे डोर के सामने जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट्स, उनको रिमूव करना चाहिए और लैंड ऑफ ड्रैगन्स को डिस्कवर करना चाहिए. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डू द चिल्ड्रन गो ऑन देयर एडवेंचर एंड व्हाट डू दे टेक विद देम? निकोबेनस और रोजी कब अपने एडवेंचर पर रवाना होते हैं और वो अपने साथ क्या चीज़ें लेकर जाते हैं? एंड द आंसर इज, द चिल्ड्रन गो ऑन द एडवेंचर द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो जिस रात को उन्होंने प्लान बनाया होता है लैंड ऑफ ड्रैगन्स को फाइंड करने का, उससे अगली ही मॉर्निंग वो अपने एडवेंचर पर रवाना होते हैं. व्हेन इट इज़ जस्ट गेटिंग लाइट, अभी मॉर्निंग का स्टार्ट ही है, तो वो अपना एडवेंचर स्टार्ट कर देते हैं. दे टेक बंस एंड लेमनेड विद देम. वो अपने साथ बंस और लेमन जूस लेके जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट नंबर A, comprehension. Write the lines of speech below. Put the name of the speaker after each one. आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये लाइंस, ये स्पीच की लाइंस किसने बोली थी. स्पीकर को आइडेंटिफाई करके उसका आगे नेम राइट करना है. एंड द फर्स्ट लाइन इज, aha, I have got you now. These words are said by the man. Second is, let's pull up every single weed on your doorsteps. Students, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है. These words are uttered by Rosie because this is the idea of Rosie. Third is, it's one of the best ideas I have ever had.
This statement is also said by Rosie. This exclamatory word is pronounced by Nicobominus. As you know, students, whenever a word is used in the story, it is said by Nicobominus. Open this door at once. Do you hear? The man. And the last statement, you'll think of something. This statement is said by Rosie. Now move to the part B, working with words. Look at this list of words and phrases from the story. Replied, whispered, yelled, growled, called out, cried, asked, shouted. Students, you just have to find these words or phrases from the story. These words or phrases are used in story Nicobominus. You have to just find these words or phrases. You can do it easily by yourself. Now move to the page number 12. Part C is learning about language. Sentences. Write questions for these answers. Note variations are possible. Student, this is an amazing activity. There are some statements and we have to write possible questions of these statements. And the first one is, she was the prime minister. वो prime minister थी. And the possible question of this statement is, what was her job? Or it also may be, who was she? We put a question mark at the end of a question. B is possibly, but I am not sure about that. Maybe, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ. The possible question of this statement or answer will be, are you sure about that? क्या आप उसके बारे में श्योर हैं? तो इसका आंसर होगा possibly, but I am not sure about that. Students, you have to write these possible questions in front of each statement. C. It most certainly is not. Students, there are many possible questions of this answer. The one is it correct answer? क्या ये सही आंसर है, राइट आंसर है? It most certainly is not. Another possible question of this statement may be, is it the right path? It most certainly is not. D. I did. And the question of this answer or statement will be, who did it? ये काम किसने किया? I did. मैंने किया. E. They call them the terrible twins. वो उन दोनों को terrible twins कहते हैं. And the possible question of this statement will be, what do they call them? उनको क्या कहते हैं? क्या कहकर बुलाते हैं? Now students, move to the question number 2 of learning about language. Make a statement, a command, a question and an exclamation for each of the pairs of words given below. Don't forget the proper punctuation marks. Student, this is a very interesting activity.
You have to use pairs of words to make a statement, a command, a question and exclamation sentence. Example is given here. Man, machine. इन दोनों पेयर्स को आपको स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन में यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन इज नॉट अ मशीन. इट इज अ स्टेटमेंट. इज अ मैन अ मशीन? क्वेश्चन. मेक दैट मैन फिक्स द मशीन. Command. Command means orders. Commanding sentences always start with the first form of the verb. And fix means repair. That's not a man but a machine. Exclamation. वो इंसान नहीं है बल्कि मशीन है. Exclamation means surprise और shock. जब आप किसी बात को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या सडनली कहते हैं तो उसकी अमेजमेंट को शो करता है. जैसे आप किसी इंसान को देखेंगे बहुत स्पीड से काम करता है तो आप बोलते हैं दैट्स नॉट अ मैन बट अ मशीन. वो तो इंसान नहीं लगता बल्कि कोई मशीन है. एंड हियर आर 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स. द फर्स्ट वन इज कैट डोर. We will make 4 sentences with these pairs of words. Cat door. There is a cat at the door. It is a statement. Is there a cat at the door? It is a question. And note students, there will always a question mark at the end of a question. Move that cat from the door. It is a commanding sentence. You are ordering someone to move that cat from the door. कि उस cat को door से हटा दो. And exclamatory sentence will be, what a beautiful cat was sitting at the door. कितनी प्यारी खूबसूरत बिल्ली दरवाजे पर बैठी है. Now students, you have to make the sentences of the remaining pairs of words by yourself. Yes students, you can do it, of course. Question number 3 of part C, learning about language, is convert the following exclamations into statements. Do not change the meanings. यहाँ पे हमें exclamations के sentences दिए गए हैं. इनको हमने statement में convert करना है, change करना है. And the first sentence is, what a lovely dress. And its statement form will be, it is a lovely dress or it is a very lovely dress. B is, how brave you are. You are saying these words to a brave man. How brave you are. तुम कितने बहादुर हो. And the statement of this exclamatory sentence will be, you are very brave. C, how angry she is. She is very angry. D, what a fine day it is. It is a very fine day. Students, we have to put very in each sentence for the words what or how. Now move to the next topic, idiomatic language. Here is a sentence from the story. So they set off through the early morning town. When they got to the end of the narrow street where they lived, they met a night watchman who said, where are you two going at this hour?
ये हमारी स्टोरी निको बॉबीनस में से एक सेंटेंस लिया गया है. In this sentence, the phrase set off, the underlined phrase set off means begin a journey. इस फ्रेज का मीन है कोई भी जर्नी स्टार्ट करना. सेट ऑफ का मीन है begin a journey. हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को idioms कहते हैं and there are many idiomatic expressions in English language. Now, move to the next page, page number 13. Part D, listening and speaking. Students, it is an interesting activity. Listen to the description of Venice and answer the questions. Mark the correct answers with a tick. Student, this is very interesting because this activity is like MCQs type. Venice is a city in Italy or France. So you have to tick mark the block in front of Italy because Venice is the city of Italy. B. The city is like a maze or market. And the correct option is maze. Maze means riddle, puzzle. एक puzzle की तरह है, उसमें बहुत सी streets हैं, इधर उधर को वेज जाते हैं. C. Venice is famous for its furniture, architecture, airport, cars. And the right answer is architecture. Architecture means the art of designing or constructing buildings. D. The city is in danger of melting, drowning, sinking, burning. And the right option is sinking because the sea level is increasing day by day in Venice. So the city is in danger of sinking. E. Venice has lots of museums and cafes and cars, famous artists, art and animals. And the right option is museums and cafes. There are many museums and cafes in Venice city. Student, this is the end of our lecture. Students, please learn these activities and question answers by heart. Take care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.